Good morning, everybody. Good morning, sir. You all are welcome to Good morning, this session. sir. Thank you so much. All are requested to keep their mic and video mute. If required, we will be asking to make it on. And all are requested to write their program code, name, then program code and enrollment number in the chat box, because it is recording the attendance. That is why try to write your name, program code and attendance in the chat box. Okay, sir. अच्छा पिलामाने टिके कहलो काली सेशन केमती लागला ठीक अछि ना किछि इंप्रूवमेंट दरकार मो पचारुजी काली रो सेशन सब केमती लागला ठीक लागला ना किछि करिया दरकार ठीक अछि सर Sir, unfortunately, ମୁଁ join କରି अच्छा ପାରିନଥିଲି अच्छा କାଲି। ठीक है जो माने जॉइन करथिले से माने कोहंतु काली सेशन कोन ठीक थिला ना आ कोन कल इंप्रूवमेंट हबो ना सर ठीक थिला ना सर ठीक थिला सब सुनि पारलो सर ना ना सुनिया बुझिया भी दरकार ना आउ ये हमरो हाँ सर काली जहा रेकॉर्डिंग टा वेबसाइट रे लोड हेची ताको देखि देबो मो एड्रेस टा भी दे दोजी YouTube रो एड्रेस टा आज्ञा सर ଠିକ ହେଲା ଅଛି sir. सर डेस्क्राइब टा हिंदी रे कॉलेज चलियोनी कि सर हां हबो हिंदी आ इंग्लिश से मैम करबे तो इंग्लिश टू इंग्लिश सर हिंदी आ इंग्लिश रे करबे से मैम काली इंग्लिश टू इंग्लिश सबटा करले बेले प्लस 2 रे तो ओडिया सर थिला सेति पई टिके बुझिबा पई टिके कष्ट होई सर बुझे में असुविधा होची नै कि हां जे सर हिंदी मा कहबे मु हिंदी कहबे हिंदी इंग्लिश ओडिया कला को नेशनल फोरम रे होची ना तो समझते कि हां टिके सर असुविधा तो जोटी बुझी पानो कहबो आ मु एबे शेयर करूची लिंक टा YouTube लिंक टा काली देख परियो समस्ते ହଁ sir. ठीक अछि सर चैट बॉक्स रे शेयर करछ हैला ए लिंक क्लिक सर करके काली रिकॉर्डिंग आपण देख परियो हेलो हां सर काली आपण जो असाइनमेंट रो से लिंक टा देले सर से जेते बेले सबे लेफ्ट मार देले ता सा कटि गला सर सेति पई हमें टेलीग्राम रे ता हम लिंक हम आज शेयर कर आज दे आउतर सर भी असाइनमेंट लिंक try to keep silence and keep your mic mute during the session को ऑफ रख कर देबे जा फल रे को हबो हमर बैंडविड्थ बेसी कंज्यूम होबनी आउ समति ठीक रे सुना जिवो वीडियोटा देखेले को होउछ कि बेसी बैंडविड्थ सरिवो बेसी डाटा सरिवो आपन डाटा भी सरिवो एठी भी डाटा सरिवो समस्तकर क्लियर होबनी सेति पई वीडियो आउ ऑडियो दीटा को बंद करके रखिबे सेशन जाको जा फल को भल रे आपन सुनि परिबे देखो मु मो वीडियो भी ऑन करनी मो फोटोटा खाली देखा जाउची हेलो सर हां सर मु अपर्णा यस प्लीज सर सर काल
काली टू क्लास स्टार्ट होलानी Yes, please, किंतु sir. मैं काली जो Dr. S.K. काली रो Panigai. नोट Good morning. sir. Good morning, sir. କୁହନ୍ତୁ। Good morning. Good morning, କୁହନ୍ତୁ। Sir. Sir, good morning, କୁହନ୍ତୁ। Good morning. Good morning. How are you? Yes, fine, sir. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିଲି କି? Yes, sir. ଆରେ ରହନ୍ତୁ। ଆରେ हेलो सर। हेलो Counselor, sir. Anadi Charan Sahoo. Sir, are you present? हेलो Anadi सर। Charan Sahoo, sir. Are you present? Sir, ଆପଣ ଆସିଲେ କି? सर मो आवाज सुबुची की? हेलो ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ପିଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଅଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ସାର୍ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲେ କୁହନ୍ତୁ। सर मो आवाज सुबुची की? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? हेलो ହଁ କୁହ। सर मो अपर्णा मो आवाज सुबुची? ହଁ ଶୁଭୁଛି। हाँ सर मु काली जॉइन करि पारि नथिली। एक्चुअली कथाटी कोन कि मो मेसेज टा 1 बजे आसिला मो पाखरी तो ହଁ ଏବେ क्लास କଲ टा ତ। हाँ जी करछि। କାଲିର କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅ, ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। सर आपणको यूट्यूब चैनल भी अछि की? ଆରେ ବାବୁ, କାଲିର ରେକର୍ଡିଂଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ସେଟାରେ ଦେଖିପାରିବ। हाँ सर। ଚାଟ୍ सर ବକ୍ସରେ लिंक ଦେଖ। सर दिया आउ थरे देबे ଆଁ आउ थरे सर लिंक टा देबे ଟିକେ ଆରେ ଉପରେ ଦେଖିଯିବା, ଲେଖିଛି ଉପରେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖୁନ। ना सर आसो कोन के ତ କରୁନି। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ आगे ना ଲେଖିଦଉଛି ଦେଖ। आगे ସମସ୍ତେ ନିଜର ନାଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ୍, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ଇଟ୍ସ କମ୍ପଲସରି। ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ତମ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ମିଳିଲା? हेलो सर कल्पना इज ୟୁଟ୍ୟୁବ हियर। ଲିଙ୍କ ମିଳିଲା? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ମିଳିଲା କି? ओके सर ହଁ କୁହ। ହଁ हाँ सर हेलो मिला। सर। ହଁ सर ଆଉ କିଛି आमे କହିବାର ଥିବ? ए लिंक टा को फ्रेंड्स मानक सहित सेंड कर परबी। शेयर करि परबा जो ହଁ माने ସେ चाहउछनी जॉइन होबा पई। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଟା ଓପନ। सर शेयर कले से लिंक ऊपर क्लिक कले एडा ओपन हे जबन ऑटोमेटिक। ହଁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ओके ଲିଙ୍କଟା सर। ଆମ ଶୁଣ, ତମ हाँ सर। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ, ସରି ଆମ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟର ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବ। ଗୁଗୁଲ ମିଟ ଲିଙ୍କ ମୁଁ हाँ सर। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଗୁଗୁଲ ମିଟ ଲିଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନି? सर हाँ सर। meet.google.com। हाँ सर। ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ଯିଏ ଦେଲେ, ଯିଏ ଜଏନ କରିପାରିଲା, କିଛି अସୁବିଧା ନାହିଁ। हाँ हाँ ओके ओके ଦେଖିଲ? सर ठीक ଅଛି। ଚାଟ୍ ठीक ଅଛି ବକ୍ସରେ सर। ଯୋଉ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ଆସିବେ।
हाँ सर 10 to हेलो 12 10 to 12 जुलाई 2 जाए क्लास हबो ओके कंटिन्यूअस हेलो सर हुआ हाँ सर 10टा बाजिलाणी क्लास की केते बेले स्टार्ट क्लास करियो टिके सार आ जने सार आज चेंज हेले तो तेणु से टिके रेडी होउछंदी आसी तांको टिके टेक्निकल जिन जणा नै तो करूनी सर हमें नोटटा रेडी करि पारबो ना सर को कथा सुनी सुनी हां करूनो ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ हां ସାର୍ ମୋର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହଉନି ସାର୍ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କୋର୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ବତାଉଛି कोन नै ହ୍ୟାଲୋ हेलो सर हेलो ठीक अछि कुओ हेलो कोंदु सर ହ୍ୟାଲୋ आइडेंटिटी ସାର୍ ମୁଁ ନିଜଟା ओके हेलो हां कोंदु यस टेल मी व्हाट इज प्रॉब्लम देखो समस्ते ए जो तळे लिखा है जी प्रेजेंट प्रेजेंट रे प्रेजेंट नाउ करके कई क्लिक करंदुनी हैला सेटा केवल काउंसलर ପାଇଁ रखा है जी तळे जो अछि गोटे कैप्शन प्रेजेंटिंग से प्रेजेंटिंग टा ऑफ करंदु राजेश्वरी किए से ना चंदन कुमार की ହ୍ୟାଲୋ हां कोंदु ହଁ ସାର୍ ମୋ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରେ ହଉନି ସାର୍ କୋର୍ସ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବୋଲି ବତାଉଛି ଫଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବତାଉଛି एग्जाम फॉर्म फिलअप तो ହଁ ସାର୍ एग्जाम फॉर्म ହଁ फिलअप ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସାର୍ हबो हबो का तमे केबे जॉइन करथि लगी କାଲି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲି ହଉନି एनरोलमेंट नंबर केते ନା 2001657380 ସାର୍ 200 तो तमे कोते प्रोग्राम कोन ସାର୍ MPS ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ पॉलिटिकल साइंस तमे जनवरी 20 रे जॉइन कलो तमे डिसेंबर रे एलिजिबल हबो you will be eligible to appear the examination in government examination 2020 December because you have joined in January 2020 okay so your exam form fill up that you can do in during September मास रे एग्जाम फॉर्म फिल अप कर परिवे तेनो एबे हबोनी ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି डिसेंबर एग्जाम में एबे बता जून एग्जाम में फॉर्म फिल अप हबोनी आपन ହଁ ସାର୍ हेलो सर हां कोंदु हाँ सर हम एडमिट कार्डटा एबे पर्यंत आसीनी मो पाखु एग्जाम रो तो हॉल टिकटटा आसी जाए ना सर एग्जाम हॉल टिकट एबे आसीबोनी एबे तो पोस्टपोन है कि अछि ना एग्जाम ना मोर तो डिसेंबर सेशन रे अछि एग्जाम टी एग्जाम पोस्टपोन है जी ए जून सेशन रो हां और डिसेंबर अच्छा सेशन रो ठीक अछि चंदन कुमार किए से तो प्रेजेंट करतो कि तमे बंद करो चंदन कुमार हेलो तुम प्रेजेंटेशन बंद करो हाँ सर आसले कि कहीं केतना लागुजे टिके देखो आपण खाली जॉइन करन थे जॉइन कला पर पिला मना पे गेले हेलो यस सर हेलो वाह यस प्लीज कोन दो सर आइडेंटिटी कार्डटा पाइनु पाइना तो देखो तुम ईमेल
खाली आरती भुवनेश्वर को ईमेल पठाओ। आज्ञा जहाँ जहाँ पारी अच्छी सेंड ईमेल टू आरती भुवनेश्वर। आरती भुवनेश्वर ईमेल आईडी मु तले शेयर कर दूँ। आरती भुवनेश्वर ये ईमेल आईडी शेयर कर दी चैट बॉक्स रे। जार किसी असुविधा शेयर कर परियो ए पठेई परियो। ସାର୍ ଏଟା କଣ ଆରସି ଭୁବନେଶ୍ୱର @ignore.in लेखा है देखिबो नै चैट बॉक्स रे। वेबसाइट की चैट बॉक्स रे एटा ईमेल एड्रेस। ओहो सर को असाइनमेंट गुड़ा दिया थी। हेलो हां हेलो यस हाँ सर असाइनमेंट दिया लगे कल असाइनमेंट तमे तो डिसेंबर दबो एग्जाम हो तमे सितंबर असाइनमेंट दबो और ठीक अछि ना ठीक सारे भी असाइनमेंट देबे असाइनमेंट के टेक्निकल प्रोब्लेम को अछि पतन हम असाइनमेंट विषय लेट अस डिस्कस अबाउट असाइनमेंट so should I tell you in English or do you want to listen in Odia ओडिया both Both, sir. Both. okay how to write your assignment first listen suppose from the website you have downloaded assignment questions okay you download assignment question from website I will be sharing the link from where you can download the assignment questions after downloading the assignment question you have to prepare your assignment responses how to prepare that for preparing assignment responses you just take only plain A4 size paper. It's not necessary to purchase any specified paper from market. You need only plain A4 size paper for depositing your assignment responses. जो So, कि रोटी सब the first page of the assignment response will be the cover page. Cover page should contain the enrollment number of the student, name of the student, study center code, program code, and the address of the student. That means the cover page. The cover page sir, contains. Yes. तिला Let me finish. sir The cover page contains all the details about the students. Then comes your question. After covering page, you attach the question paper which you have downloaded from your website. Then the third sheet. I have told the first sheet, then second sheet, then now the third sheet. From third sheet, you start writing your assignment responses. How to write your assignment responses? In sheet number 3, first you set margin in the left side. Okay, set margin nearly 4 to 5 centimeter margin. You have to leave margin with a 3 or 4 centimeter size margin. So after setting this margin, you have to write your questions in red ink. Write your questions in red ink, then answers in blue ink. In one page of this sheet, you have to write your answers, and in next page, you have to leave blank. Then first page you have to answer, second page you have to leave it as it is blank. So in the similar way, you have to write all the answers and attach the papers in the sequence. In what way I have told. That means first the cover page, then the question page, then comes your question answer pages. Okay, this is the sequence of writing the assignment responses.
after setting in similar in the same sequence that I have told in the same way, you just staple all the paper and deposit at your study center. Okay, so this is the sequence. So let me explain you. First ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ assignment question download କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ A4 ସାଇଜ ପେପର ନେଲେ, ସେଥିରେ ନିଜର ଡିଟେଲ ଲେଖିବେ। ସେଥିରେ ନିଜ ଡିଟେଲ ମାନେ କଣ, ନିଜର ନାଁ, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କୋଡ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡ ଲେଖିବେ। କୋଉଥିରେ, ଉପର ପେଜ, କଭର ପେଜରେ ହେଲା। କଭର ପେଜ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ, ତୁମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଭର ପେଜ ପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପେଜରେ, ଥାର୍ଡ ସିଟରେ କଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ନିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେପରର କେତେଟା ପେଜ ରହୁଛି, ପେଜ ଉପର ପେଜ ଗୋଟେ, ତା ପଛ ପେଜ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ର ଉପର ପେଜରେ ଲେଖିବେ, ତା ପଛ ସିଟ୍ଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସିଟ୍ରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମାର୍ଜିନ୍ 3 to 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖଣ୍ଡେ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା। ସେ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ମାର୍ଜିନ୍ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଲାଇନ୍ ନ ଟାଣିଲେ ଚଳିବ, ଓନ୍ଲି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ରେଡ୍ ଇଙ୍କରେ ନିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ଲୁରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ର ଗୋଟେ ପେଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ, ତା ନେକ୍ସଟ ପେଜ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କହିଲି ସେ ଅର୍ଡର ତାକୁ ଷ୍ଟାପଲ କରିକି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରୋସେସ। Excuse me, sir. Excuse me, ଯେତିକି sir. କହିସାର, ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ, ସେତିକି ୱାର୍ଡରେ ଆନ୍ସର ଲେଖି। ମନେକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଛି 500 words, so you have to limit your answer within the 500 words. It may extend up to 500 like that, but it should not be more than 550 words. সেটাକୁ ମନେ ରଖିବେ। 500 ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯିବ ମାନେ 500, 510, 20, 50 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। So this is the process. Okay, now I think sir has come. Sir. Hello sir. Yes. Now are you listening me? Sir, we. ଶୁଣୁଛନ୍ତି? Hello. କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ now. Excuse me, sir. ଜଏନ୍ now କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କୁହ ବିଲେ। ସାର୍ ଦେଖାହେଲା, ଆସିଲେ ଆପଣ। Sir, we have to send the assignment in soft copy or hard copy? नहीं, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସଫ୍ଟ କପି ପଠାଅ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ହେଲା। हाँ sir. ସଫ୍ଟ କପି ସ୍କାନ କରିକି ପଠାଅ। ହଉ ନା, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆସିଗଲେଣି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କ୍ୱାରି ପଠେଇବ। ଆର୍ସି ବଂଶର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ପଠେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୱାରି ହେଲା। हाँ sir. Okay, now sir has come, so I would like to thank everybody, and I welcome all of you, and I welcome the counselor also. Thanks to you, sir. Okay, now I would like to welcome Mr. Anadi Charan Sahoo. Sir, welcome to this session. So I am requesting you to address the meeting. Thank you, sir. Sir, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବଟନଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ସ୍ପିକରଟାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ସ୍ପିକର ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ପିକରଟା ଅନ୍ କରିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି। এটা মিউট ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ସାର୍। ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଅନ୍ ହେଲା। ଆସିଲା, କୁହନ୍ତୁ।
ओके पिलामाने समथिंग मोर रिक्वेस्ट समस्त निज निज ठीक है सर पिलामाने समथिंग रिक्वेस्ट आपण मान निज निज वीडियो आ ऑडियो ऑफ रखंतु जा फले भलो सुना जीवो हैला समस्त वीडियो आ ऑडियो ऑफ कर दियो सार केवल वीडियो ऑडियो ऑन करिए ओके सर Sir, आपण स्टार्ट करियो sir, thank you, sir. Welcome to my pupils. It is the distant learning course, and due to Corona pandemic situation, we are continuing this system with the help of IGNOU regional director, deputy director sirs, and we are all going to cover this course जो international relations problems and theory of MPS-2 5 units we shall cover today. You are all ready to join the class and ready to listen. You know, it is the very exciting course, and international relations is the course. Hello. Hello. yes sir continue Sir. Hello. continue sir please continue Sir. yes sir please continue Sir. International relations problems and theory and problems. We shall start from unit 1, realist and neo-realist approaches to the study of international relations, and it is the very objective approach in studying the international relation. You know, as we have our society in the international field, there is also a society. In our society, individuals are the actors. In the international field, the states are actors, and all the states form the society that is called international society. The relation between nations is called international relation. Relation between the nations is called the international relation. It may be regional, it may be entire world basis, it may be continental wise. All the relations are formed together as international relations. How to study the role played by the individual nations and group of nations in maintaining relation with other nations is called an approach. So realist and neo-realist approach is one among the oldest approach to study international relations. Realist means the actual role played by a state as an actor to maintain its own national interest. You know, every and each individual nation or a state forms its foreign policy for the regional basis, for the entire grouping basis, for the entire worldwide relations is called the foreign policy of a nation. Foreign policy, you know, the components of a foreign nation's foreign policy is first and foremost is the national interest. National interest is the first and foremost basis of an individual nation's foreign policy. How a nation deals with other nations, keeps its relation with other nations. You know, it may be neighbor relation, it may be continental relation, it may be entire worldwide nation. The
foreign policy of each and individual nation based on its own national interest. Secondly, it based on its own tradition, its own ideology, its own location, and its own nature and character, and also individual nations need. You know, India emerged as an independent nation in 1947 and formed its own independent foreign policy under the leadership of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru is the architect of India's foreign policy. He formed the foreign policy keeping in view India's own national interest. So the liberal, sorry, the realistic approach is an approach which stands for the real necessity of an individual state to deal with the other nations in maintaining with relations, in keeping its relations. As you know, every nation must have to keep its relation with other nations. A nation cannot continue, cannot develop, cannot maintain its activities in isolation. Individuals keep relations, families keep relations, so also nations also keep relations. That is called international relation. The international relation is oldest ever topic of study in our political science. You know, it is very interesting. It affects each and every nation to maintain its relation. Its activities are also formed keeping in view the relations. Hence, the realist and neo-realist approach. Introduction. What is realism? What is realism? Realism means the actual role played by an individual state in maintaining its own relation with neighbor countries, also distant countries, and also with the international organizations. International organizations, you know, international organizations are spread throughout the world. You may know the UNO, United Nations Organization. On the regional basis, you know, SARC. SARC means, you know, all South Asian Association for Regional Cooperation. It is a regional international organization. You know, the worldwide international organization. Every nation must have to link itself with the regional and worldwide organization. This is called realist. Realist is the scroll down. Sit as unit 1 to time. Unit 1 time. Details.
realist approach to the study of international relation is one of the oldest school of thought in studying international relations. Its meaning, its implication, its result, its consequence, like the benefit and the safeguard of national interest achieved by each and every state. Realism, you know, realism means political realism, that is called the realist. Real is converted to realism. Real means the actual role. Real means the actual role played by an individual nation in maintaining its relation with each and every nation and with each and every international organization. It is very important approach in studying international relation. It is this school was emerged during First and Second World War period. During the First and Second World War period, the scholars developed this school of study due to the actual role, the ideology it displays, and the actual role it plays. There is the difference. The ideology of a nation is one thing, the actual role played by one nation is the other thing. The actual role played during the First World War, you know, it occurred from 1914 to 1919. Another सर टिके मु मधुर डिस्टर्ब sir, सर sir, सर टिके मधुर डिस्टर्ब करबी sir, किछि पिला टे कंप्लेन करदिले sir. सेमाने यदि काले बुझी पारिबे न पारिबे सेति में मधुर मधुर टिके ओडिया जोरा डिफिकल्ट वर्ड राको ताऊ Sir. ओडिया रे बुझे देबे टिके डिफिकल्ट वर्ड राको ओडिया कि हिंदी रे हो सर मेजर पिला सर टिक जो क्वेश्चन आंसर ये तो सब तो लिखिबे इंग्रजी रे ना ओडिया के हां जो डिफिकल्ट वर्ड रा टिके मधुर खाली कहि देबे इंग्लिश में हिंदी रे हो डिफिकल्ट वर्ड यू डिफिकल्ट वर्ड हां सर किछि सर मो ओडिया रे कहि दउची ओडिया नले जोड़ा को माने आपण फील करसुनी पिला को टिके डिफिकल्ट हबो जो वर्ड आडा को जोड़ा आपण टिके तांको कहि दे से माने को कंफर्टेबल हबो टिके हो सर हां ओके ओके सर वास्तव रे प्रत्येक व्यक्तिर संपर्क आवश्यक अनुरूप भाव रे गोटे परिवार निज समाज रे अन्य परिवार सहित संपर्क आवश्यक से भली राष्ट्र मध्य बिना संपर्क रे आदौ तिष्ठी पारिबो नाही राष्ट्र राष्ट्र भितरे थिवा संपर्क को अंतर्जातिक संपर्क बोली कहा जाय जहा होची हमर विषय वस्तु राष्ट्र राष्ट्र मध्य रे थिवा संपर्क जा कहा जाय इंटरनेशनल रिलेशन प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र सह संपर्क रखिया पई आइदर और पॉजिटिवली और नेगेटिवली according to its own compulsion, according to its own national interest संपर्क रखिया पई बाध्य केवल राष्ट्र राष्ट्र मध्य रे संपर्क नुहे बहुत गुडिए अंतर्जातिक संगठन अछि जहा कहा जाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पुनी विभिन्न प्रकृतिर प्रकारर आंचलिक दृष्टि हो आंचलिक अर्थ रीजनल बेसिस रे गोटे एग्जांपल दउची तुम डिग्री कोर्स रे निश्चित भाव रे याकू पढिथिबो
सार्क भारत जो अंचल अवस्थित से अंचल को कहा जाउची दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया रे भारत अवस्थित। भारत तार अन्यान्य पड़ोसी राष्ट्र माननकु नेई जो आंतर्जातिक संगठन गढ़ी उठीची ताहाकु कहा जाए सार्क बोली, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आंचलिक सहयोग पाई। इटू नेम रु स्पष्ट भाव रे जना पड़ची रीजनल कोऑपरेशन, आंचलिक, यह होची एक आंचलिक आंतर्जातिक संगठन। तेणु आंतर्जातिक संगठन आंचलिक हो, आंतर्जातिक संगठन विश्वव्यापी हो, विश्वव्यापी आंतर्जातिक संगठन हिसाब रे गोटे एग्जांपल पिला माननकु मु दबा को चाहिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन by UNO। तुम जानी चो UNO was formed during post second world war period। द्वितीय विश्व युद्ध परे समग्र पृथ्वी पृष्ठरु युद्धर भय दूरेई दवा पाई, विश्व शांति प्रतिष्ठा करिवा पाई लक्ष्य होची, मिशन होची to uphold world peace forever through dialogue, to resolve the every international dispute through dialogue। राष्ट्र राष्ट्र भितरे जो विद्वेष बा कोनोसी विवाद अछि ताहाकू शांतिपूर्ण आलोचना माध्यम रे समाधान करी आउ युद्धर परिवेश आ परिस्थिति सृष्टि न करिवा दिगरे जो संगठन कार्य करिवो बोली गढ़ा जायछि ताकू कहा जाउछि मिलित जाति संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ईयर 1945 and month is October, date होछि 24th October 1945। ता पूर्व गोटे विश्व संगठन गढ़ा जाइथिला, तुम जानिच प्रथम फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तार नाम थिला द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशंस होछि प्रथम विश्वव्यापी विश्व संगठन। तार लक्ष्य मध्य अनुरूप भाव रे सेया ही थिला। प्रथम विश्व युद्ध परे गठन करा जाइथिला विश्व संगठन द लीग ऑफ नेशंस। लक्ष्य थिला विश्व रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा करिवा, मात्र लीग ऑफ नेशंस तार मिशन रे विफल हेतिला एवं द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हेतिला। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होबा सह द लीग ऑफ नेशंस रो मृत्यु मध्य द्वितीय विश्व युद्ध। सर ठीक है, माने पूरा ओडिया न होई कि माने इंग्लिश रे कोन अल्प टिए किछि ओडिया मिसेबे ना सर काहे ना बेसी सारे इंग्लिश मो बेसी इंग्लिश गोटे मधे मधे गोटे गोटे ताको टिए ओडिया कहबे ना एमि सेने पिला किछि लिखि परबे ना नहीं कि आज्ञा सर। हां सेमिति करिया माने मैक्सिमम गोटे इंग्लिश रे हो ओडिया अल्प गोटे गोटे डिफिकल्ट वर्ड किछि ओडिया रे कहबे जेना लागुछि नले नाही मो आ से माने इंग्लिश पढिए ना नहीं कि आज्ञा आज्ञा सर के कांसेप्ट सर के क्लियर हे गले से तारे पिला माने सर ओन नॉलेज रे ओन लैंग्वेज रे सर रिप्रेजेंट करि परिबे जाके हम पई सर टिके लाभप्रद हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है जेटा आपण विद्वान को भलो हो सेटा करंदु हला माने इंग्लिश एंड ओडिया कांसेप्ट बुझे दंदु। हां सर कांसेप्ट हम बुझे दउची इंग्लिश रे सर क्वेश्चन आंसर गुडा के केमती सर प्रेजेंट करियो ताकू मो इंग्लिश रे पूरा कंप्लीटली बुझे देबी गाइड कर देबू गाइड सब्जेक्ट मैटर भी आपण इंग्लिश रे ओडिया मिसा मिसी करी कहि देबी। एक्चुअली क्लास रे सर से आई हुए पिला माने बेसी डिमांड करंती सर बुझियो नै
ଆଉ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କାରଣ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି ତ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସବୁ ହଁ ଇନଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେବେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ କଥା ହଁ ହେବେ କ୍ଲାସ ହଁ ଏଠି ତ that should be in mixed medium. ସାର୍ 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 Yeah. ସାର୍ But English should have maximum priority. ସାର୍ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ତ ହଁ ମିଡିୟମ ଅଫ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ ସାର୍ ଆଉ Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Please continue. ସାର୍ ସାର୍ Sir. So this is the international relation. International relation means, once again I am repeating, international relation means relation among nations. Why we call a state as nation? It is the concept that is with the political theory. हमें theory पढ़िचे राजनीति विज्ञान तत्व जोठी राष्ट्र को आजिर दिन रे केवल स्टेट बोली कहा जाउ नाही it is converted as nation state. Every state is converted today as nation state. Each state is a nation. So we don't call it as state. We term it as nation. The relation among nations is called international relation. How we can study, how we can know the relation of what is the relation, how it is formed, what is its effect, and how the relation is changed among nations. That is called international relation. This type of study needs some schools, some approaches. Schools means some approaches. How we can study. किभଳି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ବା ଜାତି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍କଲାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା से दृष्टि जेते गुड़िए स्कूल ऑफ थॉट अच्छी ता भितर अन्यतम होची रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच. रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच. It is an oldest school of thought in studying international relations. What is realism? Realism, also known as political realism. It is a dominant school of thought within the arena of international relations. It means the strategy of a nation in maintaining its relation. अर्थात गोटे राष्ट्रर कौशल, गोटे राष्ट्रर चरित्र अन्य राष्ट्र सह संपर्क निर्धारण. It is the strategy. केवल राष्ट्र सह नुहे, आंतर्जातिक संगठन सह, आंतर्जातिक आंचलिक संगठन सह गोटे राष्ट्र जो संपर्क रखुची एवं परिवर्तन मध्य होची सेटा होची रियलिस्ट. एंड नेक्स्ट इट इज कॉल्ड नियो-रियलिस्ट with some sort of changes. First it was created realist. This school of thought came to existence just after Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध पर एभली एक अप्रोच रो परिकल्पना अंतर्जातिक स्कॉलर माने आरंभ करथिले एवं एक नूतन अप्रोच रूपे गढ़ी तोड़िथिले. It is the approach that maintains the state, how it makes it formulates its own attitude. संपर्कटा attitude रु ही जना पड़े. तेणु व्यक्तिर attitude, व्यक्तिर जे भली attitude अछि राष्ट्रर मध्य से भली attitude अछि.
रियलिस्ट अप्रोच से कथा को ही ध्यान रे रखे गोटे राष्ट्रर आटिट्यूड को किभଳି आमे अनुध्यान करिया किभଳି आमे बुझिबा हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ ए नेशन in maintaining relation with other nations, in maintaining relation with international organizations. How the relation, the attitude is changing time to time. This is called realist approach. A state or a nation engage with war. How and why? The first and foremost cause is national interest. प्रत्येक राष्ट्रर निजस्व स्वार्थ होची सबुठारु एक बड़ कंपोनेंट बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जहारी उपरे निजर संपर्क को से निर्धारण करे बा परिवर्तन करे तेणु नेशनल इंटरेस्ट बा जातीय स्वार्थ जहाँ को कहा जाए स्वार्थ को छाड़ी मनुष्य बंची नहीं स्वार्थ को छाड़ी राष्ट्र भी बंची पारिबो नाही तेणु जातीय स्वार्थ होची सर्वप्रथम सर्व अग्राधिकार held to formulate the attitude of a nation. तेणु जातीय स्वार्थ सह गोटे राष्ट्रर जो एटीट्यूड कहा जाए बा फॉरेन पॉलिसी बोली आमे साधारणतः कहि थाउ वैदेशिक नीति निर्धारण गुड़ाए मूलदुआ अच्छी जातीय स्वार्थ होची सबुठारु बड़ मूलदुआ नेशनल इंटरेस्ट कहा जाए जातीय आदर्श हिस्टोरिकल बा निजर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाकू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोली कहा जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थ भारत जानिच भारत निजस्व नीति निर्धारण पूर्वरु जेतेबेले स्वाधीन हैला ता पूर्वरु बारंबार वैदेशिक आक्रमणर शिकार होईची भारत होची पृथ्वी रे एभଳି एक राष्ट्र जे कि बारंबार वैदेशिक आक्रमणर शिकार होईची किंतु केबे हेले भारत कौनसी वैदेशिक राष्ट्र उपरे आक्रमण करि नाही अर्थात विश्व शांति होची भारतर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ताकू ही आधार करी बेस करी दैट इज द बैकग्राउंड बेसिस upon which India has formulated its own foreign policy. Similarly, other nations also formulate their foreign policy, वैदेशिक नीति, keeping in view their historical background. Historical background सहित अन्य गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता होची जेउ स्थान रे अर्थात अवस्थिति लोकेशन लोकेशन होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नहेले मध्य अन्यतम गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता गोटे राष्ट्रर आंतर्जातिक संपर्क और स्थिति एवं परिवर्तन मेंटेनिंग एंड चेंजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन को बेसिस उपरे रहउची ता सहित internal politics also compels a nation to maintain or to change its relation with other nations. मु इंडिया रो गोटे एग्जांपल देबी जानिछ समस्ते our neighbor country our neighbor state Sri Lanka faced civil war. You know, Sri Lanka was a neighboring country in our south which has two race of people. One is Tamils, another is Sinhalese. Sinhalese are majority, Tamils are minority. In the past, you know,
Tamils in Sri Lanka fought for separate statehood for their own racial interest. सिंघोली आउ तमिल मानक भितरे जो जातिगत विद्वेष थिला ताकू आधार करी उभय सिंघोली आउ श्रीलंकार सिंघोली आउ तमिल जाति भितरे गृह युद्ध लागितला सिविल वार लागितला भारत इंडिया सेठी आंतर्जातिक संपर्क बा आंचलिक संपर्क बा नेबर रिलेशन पड़ोसी संपर्क श्रीलंका सहित मेंटेन करथिला कीपिंग इन व्यू दी इंटरनल पॉलिटिक्स इन इंडिया इनसाइड इंटरनल पॉलिटिक्स कारण जानिचो देयर इज ए स्टेट नेम्ड तमिलनाडु Tamil is in India, Tamil is in Sri Lanka are one race. Tamil is in India forced Indian government to support Tamilis in Sri Lanka. I am explaining it only to show, only to example how internal politics of a state, a nation is forced to maintain its relation with other nations. There are several components. Anyway, realism is the actual role played by a nation in maintaining its relation with other nations or with international organizations. It is called the realist school of thought to understand the international relation. Thereafter, it was a change in realist approach. The realists, the scholars of this school of thought changed into Neo-Realist with a little bit of change, that is called Neo-Realist. The initial realist school of thought was termed as classical realism, and afterward, with some sort of change, it was termed as neo-realism. Classical realism, that is called traditional realism. The change it was characterized to realism is called neo-realism. Both classical or traditional realism and neo-realism mixed together, and it is termed as a school of thought to study, to understand the attitude of a nation in maintaining its relation with other nations, its relation with international organizations. Two types of relation. One is relation among nations, another is relation of a nation with international organizations. Two types of relations. So classical realism was changed. You know, the exponents of classical realism is, you know, Machiavelli, the father of modern political science. You know, Aristotle is the father of political science. Machiavelli is the father of modern political science. How? Machiavelli is the Italian philosopher who changed the political science into a new arena, and with a fundamental change, due to its fundamental change in politics, he was regarded as the father of modern political science. He separated religion, the religious use of religion, religious laws from state administration.
राष्ट्र शासन ठारू धार्मिक शासन को संपूर्ण भावरे अलगा करि देथिबारु निकोलो इटालियन फिलोसोफर निकोलो माकियाभेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान जनक बोली कहा जाए बुझिल निकोलो माकियाभेली होचंती आधुनिक राजनीति विज्ञान जनक जे कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी रसी होचंती अन्यतम एक्सपोनेंट there are also Hans and other exponents who formed this school of thought. Next is Neo-Realism. Neo-Realism means international politics. It was added international politics with international relation. International politics, the word politics was added to international relation. There was politics. Politics means the art of maintaining, art of formulating, the art of changing relation of a nation with other nations. That is called politics. In the Second World War situation, you know, the entire world was divided into two camps. That is called bipolar system. You must have acquainted with the international terminologies, the Cold War situation, international organization, bipolar system, how the states are divided in grouping into two groups. One is, you know, NATO, another is Warsaw Pact. The Second World War after the Second World अर्थात पोस्ट द्वितीय विश्व युद्ध पर समग्र विश्व दुई केंद्रिक है ये दुई केंद्रिक विश्व को बाइपोलर सिस्टम बोली कहा गया at that time the politics the nature and character of relation of a state with other that is called international politics was that is called bipolar दुई केंद्रिक विश्व प्रथम विश्व युद्ध हेइथला द्वितीय विश्व युद्ध हेइथला द्वितीय विश्व युद्ध जो दुईटी पक्ष भितर हेइथला प्रथम विश्व युद्ध मध्य से दुईटी पक्ष भितर हेइथला प्रथम विश्व युद्ध अलाइड पावर और सेंट्रल पावर भितर दुईटा मिलिटरी कैंप बा दुईटा मिलिटरी ग्रुपिंग भितर हेइथला द्वितीय विश्व युद्ध मध्य ठीक सेटा सेही दुईटा मिलिटरी कैंप बा मिलिटरी ग्रुपिंग भितर हेइथला द्वितीय विश्व युद्ध र परिसमाप्ति कथा तुम समस्त जानिछ गोटिए साइड संपूर्ण भाव में ध्वंस पाईगला पृथ्वी पृष्ठ रे आणविक बोमार प्रथम एवं ए पर्यंत शेष परीक्षा हेइची सेठी जापान और नागासाकी और हिरोशिमा रे जा फल कि जापान संपूर्ण भाव में विध्वस्त हेइतला भविष्य रे विश्व शांति पाई विपद न होआ पाई जर्मनी को दुई भाग रे विभक्त कर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जर्मनी राजधानी तुम जान बर्लिन सहर रे विराट प्राचीर निर्माण करा जाय जाको दी गेट वॉल ऑफ बर्लिन ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी कारण जे जर्मनी शुड नॉट बी ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस इन फ्यूचर ए लक्ष्य नहीं जर्मनी को दी भाग विभक्त कराइतला गोटे साइड संपूर्ण एभली डिवास्टेटिंग जो कन्सिक्वेंस आसला सेकेंड वर्ल्ड वार पृथ्वी रे समस्त चिंता करथिले समस्त भाबिथिले जे तृतीय विश्व युद्ध कथा आउ मनरे केही परिकल्पना करिवे ना किंतु इट वाज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग सून जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर entire world was divided into two military rival camps.
two military rival camps. One was the leader, USA, United States of America. The ideology was democratic liberalism. गणतांत्रिक उदारवादर राष्ट्र होची अमेरिका, पूंजीवादी राष्ट्र कैपिटलिस्ट स्टेट जार लक्ष्य होची विश्व को नियंत्रण करी. Another state named erstwhile USSR, Union of Soviet Socialist Republics. 15 रिपब्लिक्स को 15टी प्रजातंत्र मिसई से समय सोवियत यूनियन सृष्टि होता जार आदर्श थिला साम्यवाद कम्युनिज्म. दुईटी परस्पर विरोधी राजनैतिक आदर्शर शक्तिशाली राष्ट्र. Two mighty states. One is led by USA, another was led by USSR. The states who followed USA joined with a campaigning named as North Atlantic Treaty Organization, a military treaty, a military and गोटे सामरिक गोष्ठी सामरिक राजीनामा बल जो गोष्ठी सृष्टि होता तार नाम थिला नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन. संक्षेप शॉर्ट फॉर्म रे नाटो बोली कहा जाए, जार नेतृत्व नौला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आउ गोटे कैंप थिला वार्सो पैक्ट. वार्सो पोलैंड रो वार्सो नामक स्थान रे एभली एक चुक्तिनामा स्वाक्षरित हो संगठन सृष्टि तार नामकरण करा जायतिला वार्सो पैक्ट बोली. वार्सो चुक्ति बल जो सामरिक मेंट सृष्टि होता ताकू कहुला वार्सो पैक्ट. तार नेता थिला तत्कालीन सोवियत रूस. उभय सामरिक मिलिटरी एवं इकोनॉमिक आउ टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी दृष्टि उभय राष्ट्र परस्पर विरोधी राजनैतिक सामरिक संगठन रे सृष्टि करी प्रतियोगिता कंपटीशन. अर्थात आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार बा पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड was divided into two camps, that is called bipolar system. At that time there was politics more, and this is called Neo-Realism. Next, the key concepts in Realist Approach you must have in your study material: national interest and other factors responsible for formulating the international relation of a nation is national power, national interest, national ideology, historical background. These are the key points. National security, जातीय स्वार्थ, जातीय निरापत्ता मध्य ये सब गुड़िक होची रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच रो गुटे गुटे की पॉइंट. Another factor we should touch, that is called theory of conflict. Conflict means संपर्क जोठी अछि, द्वंद्व सेठी अछि. Where there is a relation, there must be conflict. As nations build relations, there must be conflict among nations also. That is called theory of conflict. Conflict means, like human beings, states also indulge in war, indulge
in shadow war छाया युद्ध बोली कहती युद्ध छाया युद्ध अतीत रे थिला हमें देखिथिले बुझिथिले कोल्ड वार शीतल युद्ध राष्ट्र गुड़िक से सबू निवृत्त रुहंती नहीं से सबू अंशग्रहण करती कौथे सीधा सड़क युद्ध रे हो बा छाया युद्ध रे हो बा से समय शीतल युद्ध रे शीतल युद्ध हूँ द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती अवस्थार विश्व व्यवस्था विश्वर जो घटनावली चलता से समय शीतल युद्ध कोल्ड वार तापरे छाया युद्ध ये सब गुड़िक हूँ थियोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोटे गोटे नेचर एंड कैरेक्टर अनदर इंपोर्टेंट फैक्टर हो ए रियलिस्ट एंड न्यूरलिस्ट अप्रोच रो होची थियोरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्षमतार संपूर्ण भाव में इक्विलिब्रियम सम शक्ति मेंटेन करने को गोटे राष्ट्र गोटे स्थान रे अवस्थित एबे तुम देखुथबो प्रेजेंट वर्ल्ड देयर इज द conflict among nations particularly conflict between two mighty nations. One is United States of America, another is People's Republic of China. In order to establish the world leadership, both China and America are in conflict, and there is the link of balance of power. Both are mighty, and how much in order to establish hello sir, sorry to disturb. Sir, what is the particular topic discussing now? Unit 1, realist and neo-realist approach. MPS 1 में तो ये सब नहीं है. MPS-2 Unit 1, realist and neo-realist approaches to the study of internationalism. सर आज तो MPS 1 का था ना. MPS 2 हम तो आसन क्या है MPS 2. ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज. MPS 2 Book 1 Volume 1 Unit that is International Relation Theory and MPS 2 MPS 2 Unit 1 Realist and Neo-Realist approaches to the study of international relation. Would you understand? Okay. Yes sir. We have going to complete Unit 1, but hello. Yes sir, we're here. Please continue. Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 2. It is called Unit 2. Another approach: liberal and neo-liberal approaches to the study of international relations. Unit 1 was realist and neo-realist approaches to the study of international. Unit 2, we are going to liberal approach to the study of international relations. Liberalism, you know, it is the very much known as pluralism. It projects a different image of realism, a complete change to the approaches. The first unit, realism, is known as liberalism. Liberalism is otherwise known as pluralism, बहुमतवाद. Liberalism, you know, उदारवाद. We are very much
familiar with this type of concept, liberalism or pluralism. How international relation is known from liberal approach or pluralist approach. Unlike realists, the liberals have a progress and the faculty of reason that each individual is endowed with or reject the realist notion that war is the natural condition of world. War is not natural. Liberals opine that war is not natural, war is artificial. The states engaged in war only to maintain its own national interest and only to maintain its own national security also. From two regions, there is the world, there is the war among nations. One is to maintain national interest, another is to maintain national security. Liberal approach to the study of international politics has its roots in political theory in the 17th century. Closely connected with the liberal state, the liberal tradition generally takes a positive view of some of the major contribution until the mid-20th century, where the number of scholars, but political philosophers, political economists, and neo-political exponents like John Locke, you know, British philosopher, English philosopher John Locke is the liberal thinker who is the major exponent of liberal theory and liberal approach to the study of international relations. You know, John Locke is the exponent of social contract theory in the origin of a state. Similarly, he also the exponent of the liberal approach to the study of international relation, which is the subject matter. Individuals are the primary international actors. Liberal put the individuals as the center. You know what is the difference between the realist approach and the liberal approach to the study of internationalism? Realists think that the states are actors in international relations, international politics. आंतर्जातिक राजनीति कुह बा आंतर्जातिक संपर्क कुह, ये संपर्क एवं राजनीति रे राष्ट्र गुड़िक बा जाति गुड़िक होचंती जणे जणे एक्टर बोली रियलिस्ट माने कहंती. बट लिबरल्स never accept it. Liberals opine that the individuals are the actors, not the state. राष्ट्र आदौ एक्टर नुहंती. राष्ट्र बदल रे व्यक्ति होचंती. देखुनो बैटरी लो हो गला. राष्ट्र बदल रे व्यक्ति माने होचंती आंतर्जातिक प्लेयर्स, आंतर्जातिक बा इंटरनेशनल एक्टर्स. ये कहती ना लिबरल्स. लिबरलिज्म is otherwise known as pluralism, जार मुख्य एक्सपोनेंट होचंती जॉन लॉक. बैटरी लो 10% बिलो.
This, like realist approach, the liberalism or liberal approach to the study of international relation has two types. One is classical liberalism, another is neo-liberalism. Like realism, neo-realism, ଯେମିତି realist approach ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି traditional ବା classical realism, Sudhir Ranjan Das. Okay, sir, now it is audible. Sir, it is audible now. Sir. What is the purpose of a
Now you can continue. Sir, welcome you back to students. Unit 2, Subhasri Guru, liberal and new. Subhasri Guru, don't. Hello. Subhasri Geru ke se presentation karantu nahi. I'll come back to that. But first and foremost thing is Okay, sir. Sir, liberal and new liberal approach to the study of international relations. One concept is important, that is called the concept of world order. The international order, world order, Vishwa Vyavastha. Order means Vyavastha, the system, the equilibrium of power, the power balance among nations, the politics, the influence balance among nations is called the world order. World order means the order, the system, the situation. Hello? Hello? Sir, audible, sir? Hello? Yes, sir, it is audible. Yeah. Sir, it is audible. Subhasri Geru ke present on karantu. Samaste video off karantu. Video off karantu samaste. Priyam Prava and Basanti, sabu video off karantu. Rasmita, off your video. Madhusmita, off your video. Video switch off karo. Okay, Tapaswini. Present पे क्लिक करो नहीं. हीरो सागर साहू किए प्रेजेंटिंग प्रेजेंट रे क्लिक करो नहीं. हीरो सागर रश्मिता सिंह प्रेजेंट बंद करंदु नले आउट कर देबी मीटिंग रु. रश्मिता सिंह प्रेजेंट बंद करंदु नले आउट कर देबी मीटिंग रु. this is the reality of life. While we are living this year, Okay, sir, I can continue now. we have a lot of things, we have experience. Sir. Hello. Sir. Okay, sir, continue. Please. The world order implies that a nation is anxious enough to safeguard its own sovereignty over other nations and to establish its own influence throughout the world is called the world order. World order বা বিশ্ব ব্যবস্থা এভଳି ଏକ কনসেপ্ট ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସଭରେଣ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମରତ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ. ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା world order means the peaceful situation, the peaceful condition in which a nation craves to maintain its own sovereignty and to maintain its own establishment and its own influence throughout the world. Hello? देखिला introduction है लगी. Yes, sir, it is okay now. Sir. हीरो सागर साहू किए बारंबार प्रेजेंट क्या करछोंदी. हीरो सागर साहू don't click on presentation. Hero Sagar Sahoo, don't click on presentation, just join only and keep your audio and video off. Another concept is important in this unit is the concept of globalism. Globalism is the major concept that means the promotion
by rationalist, humanist, and universalist actors and socialist and political persuasions. You know, liberals conceive that the state is not an actor in international politics. Individuals are actors. The nature of an individual in terms of rationalism, humanism, universalism is known as globalism, the concept of globalism. Globalism means विश्व स्तरीय विश्व व्यवस्था को ग्रहण करुवा एटीट्यूड एप्टीट्यूड को कहा जाए ग्लोबलिज्म बा विश्ववाद। विश्ववाद कहले समग्र विश्व को गोटिए चरित्र रे बांधी रखिबा एवं समस्त को अपनार करिवार जो मानसिकता व्यक्ति प्रदर्शन करे लिबरल्स ताकू विश्व व्यवस्था बोली कहते वर्ल्ड ऑर्डर एवं से वर्ल्ड ऑर्डर रे व्यक्तिर एभली चरित्र को चरित्र ना रैशनलिज्म विचारबोध ह्यूमनिज्म मानववाद एवं ग्लोबलिस्ट सोशलिस्ट सामाजिकवाद एटीट्यूड को कहा जाए ग्लोबलिज्म। विश्ववाद समग्र विश्व को गोटे एकतार सूत्र में बांधी रखार व्यवस्था को विश्ववाद बोली कहा जाए। जेभली आम जो कनसेप्ट देखिथिले पढ़िथिले जे ग्लोबलिज्म वर्ल्ड ऑर्डर एक वर्ल्ड ऑर्डर भली ग्लोबलिज्म गोटे इंपोर्टेंट कनसेप्ट अछि यूनिट रे सेटा को भल भाव रे टिके ध्यान दबो कारण सेटा क्वेश्चन रे आसे बहुत समय शॉर्ट क्वेश्चन में the concept of world order, the concept of globalism, एगुड़ी सब आसे। नेक्स्ट यूनिट का हमें जीवा structural and functional approach to the study of international relations. Structural and functional, structure and function. The very name, very title suggests its meaning. What is the structure of international system? Structure, how it functions. What is the structure and how it functions is known as structural functional approach to the study of international relations. Structure, you know, the states combined together, entire world basis is known as international structure of society. Structure means society, international structure of society. आमे जिमती व्यक्ति माने आमर एठी समाज गठन करंती अंतर्जातिक स्तर रे राष्ट्र राष्ट्र माने मिसी जो समाज गठन करंती that is called the structure, that is called the structure of international relation. The states combine together with a positive attitude to maintain its relation with each and every nation is called the structure of international relations. Structure, गठन कहार आंतर्जातिक समाज इंटरनेशनल सोसाइटी आंतर्जातिक समाज गठन को स्ट्रक्चर बोली कहा जाए एवं हाउ दैट स्ट्रक्चर फंक्शंस खाली तो सृष्टि कले चलबनी ताकू आमे मेंटेन करिया पड़िबो संपर्कटा को सबुदिन संपर्कटा एक यूनिवर्सल फेनोमेनन संपर्क जो रिलेशन कहा जाउची ये संपर्क बा रिलेशन ता वन डे अफेयर नुहे एटा होची यूनिवर्सल अफेयर प्रतिदिन मे बी इट पॉजिटिव मे बी इट नेगेटिव व्हाटएवर इट मे बी देयर मस्ट बी रिलेशन कोट रिलेशन हबो इंटरनेशनल एरिना रे अंतर्जातिक स्तर रे राष्ट्र राष्ट्र भितरे स्टेट और स्टेट भितरे बा जाति और जाति भितरे ये स्ट्रक्चर टा केमती है सोसाइटी टा किभली गठन करागला राष्ट्र राष्ट्र दी स्टेट्स कंबाइन टुगेदर
The states meet together and formed a society. How the society functions, that is called functionalism. Structuralism, functionalism. गठन आउ कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहार आंतर्जातिक संपर्कर गठन स्ट्रक्चर आंतर्जातिक समाज रो कार्य राष्ट्र आंतर्जातिक समाज रे की कार्य संपर्क ही आ संपर्क सृष्टि हुए संपर्क बदले संपर्क गतिशील हुए संपर्क दृढ़ीभूत हुए संपर्क मध्य छिन्न भी हुए राष्ट्र राष्ट्र भितर जो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छी प्रत्येक राष्ट्र ईच स्टेट कीप्स इट्स रिलेशन विथ अदर स्टेट इज नोन एज डिप्लोमैटिक रिलेशन कूटनैतिक संपर्क डिप्लोमैटिक रिलेशन राष्ट्र राष्ट्र भितर संपर्क को आंतर्जातिक संपर्क आम कहि परिबा कूटनैतिक संपर्क बोली भी आम कहि परिबा दैट इज इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशन कूटनैतिक संपर्क तुम जानिच प्रत्येक राष्ट्र जो राष्ट्र सहित संपर्क रक्षा करि थाए वैदेशिक संपर्क इंटरनेशनल रिलेशन से राष्ट्र रे निजर दूतावास स्थापन करि थाए एम्बासी दूतावास एम्बासी इंडियन एम्बासी एट अमेरिका इंडियन एम्बासी एट लंडन इंडियन एम्बासी प्रत्येक राष्ट्र दूतावास जहाँ सहित भारत संपर्क अच्छी वैदेशिक संपर्क सबू राष्ट्र दूतावास भारत रे अच्छी भारत जो राष्ट्र सहित संपर्क रखी जेते राष्ट्र सहित संपर्क रखी सबू राष्ट्र निजर दूतावास से दूतावास रे किए थांती राष्ट्रदूत जाको कहा जाए एम्बासडर बोली मेंटेनिंग रिलेशन एम्बासडर इंडियाज एम्बासडर को दुईटा नेम रे कन्वर्ट करा जाए एर्स्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर पूर्वतन ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त राष्ट्र गुड़िक जो दूतावास निज निज भितर खोली थांती सेठारे जो राष्ट्रदूत को अवस्थापित करि थांती तांकु एम्बासडर बोली से माने संबोधन करंतिनी तांकु कहंती हाई कमिश्नर सेम एम्बासडर एंड हाई कमिश्नर these are interchangeable terminologies केवल ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त राष्ट्र माने निजर स्वतंत्रता अतीतर से जो चिन्ह को एबे भी मेंटेन करिया पाई से माने निज निज भितर जो राष्ट्रदूत आदान प्रदान करंती तांकू हाई कमिश्नर बोली ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त थिला भारत भी ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त थिला ऑस्ट्रेलिया रो जो राष्ट्रदूत भारत रो अछि तांकू ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बोली कहला भारत राष्ट्रदूत जी अछंती ऑस्ट्रेलिया रे तांकू इंडियन हाई कमिश्नर बोली कहला जाय किंतु अमेरिका रे जे राष्ट्रदूत अछंती तांकू एम्बासडर बोली कहला जाय एम्बासडर हाई कमिश्नर दीज आर इंटरचेंजेबल ओनली एर्स्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर स्टेट मान के भीतर जो राष्ट्रदूत आदान प्रदान हुए ताको हाई कमिश्नर बोली टर्म करा जाए ताको छाड़ी जेते राष्ट्र अछंती सेठी जो राष्ट्रदूत आदान प्रदान करे ताको एम्बासडर बोली कहा जाए राष्ट्रदूत नियुक्ति करा जाय था रिलेशन को मेंटेन करिवा पाई टू एस्टैब्लिश टू कंटिन्यू to strengthen the international relation among nations, the ambassadors and high commissions are appointed in each and every state with which the state has its relation. That is called diplomatic relation. That relation,
how it functions in international society. That is called functionalism. Structuralism, functionalism. What is the structure of international society? What is the structure of international relation? What is the function of international society? And what is the function of international relation? That is called structural and functional approaches to the study of international relations. आंतर्जातिक जो संपर्क अच्छी ताकू अध्ययन करिया पाई रियलिस्ट और न्यूरियलिस्ट अप्रोच हम पढ़िले ताकू बुझिया पाई लिबरल न्यू लिबरल अप्रोच हम पढ़िले ताकू बुझिया पाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच हम पढ़िले ओनली एम टू लर्न टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन among nations, the international relation of a state with international organizations. Two, one is relation of one nation with other nations. Another is relation of one nation with international organizations. International organizations are of different types. I have already told you, regional basis, inter world basis, but विभिन्न नेचर रो स्पेसिफिक कैटेगरी रो इकोनॉमिक फोरम हो मिलिटरी फोरम हो विभिन्न प्रैक्टिकल सेक्टर रे ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब अछि ता सेठी गोटे राष्ट्र रो कार्य भूमिका संपर्क ये सब को अध्ययन करिया पे गोटी गोटी अप्रोच सृष्टि करा जायछि एवं ए अप्रोच टी होछि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हम बुझिया केमती आंतर्जातिक संपर्कटा कोन बोली कि भली बोली सेति पई ये गोटी गोटी अप्रोच सब सृष्टि करा जायछि डेविड मित्रानी is the prominent proponent of these structural functional approaches to the study of international relations. He designed what is the nature, character, and attitude of a state in functioning the structure of international society. आंतर्जातिक समाज रो जो रूपरेख अछि सेथिरे राष्ट्र रो भूमिका लक्ष्य उद्देश्य कार्य एवं परिवर्तन रो सब ढांचा को किभଳି आमे बुझिबा सेकु से बुझैछंती मिस्टर डेविड मित्रा एवं से क्लियर भाव रे कहिछंती दिस इज नॉट स्टैटिक इट इज ए डायनामिक international relation is a dynamic feature of individual state and a dynamic feature of international organization also. प्रत्येक राष्ट्र रो संपर्क होची गतिशील निश्चित भाव रे यह आगो को बढ़े पॉजिटिवली हो बा नेगेटिवली हो किंतु सेही जगह रे रही जाय ना संपर्क निर्दिष्ट भाव रे गोटे एंड अर्थात एंड पॉइंट नहीं रिलेशन रो एंड पॉइंट नहीं एटीट्यूड रो एंड पॉइंट नहीं एवर चेंजिंग एवर रनिंग रिलेशन से रिलेशन को हमें बुझिले हमें जानिबा व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन ठीक जेमती लिबरल अप्रोच पढ़िथिले रियलिस्ट अप्रोच पढ़ते स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑल्सो क्लासिकल दी टाइप रो अर्थ होची प्रत्येक अप्रोच रे दुई टाइप रो अर्थ होची गोटी होची क्लासिकल आरंभ जेता बेले हेतला तार अर्थ कोन थिला तो परवर्ती अवस्था रे ताकू मॉडिफिकेशन करा गला ठीक पे ताकू दी भाग व्यक्त करा होची गोटे होची क्लासिकल बा ट्रेडिशनल आ गोटे होची नियो बा मॉडर्न अप्रोच सेटा रियलिस्ट रो अछि सेटा लिबरल अप्रोच रो अछि सेटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी अछि क्लासिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच नियो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सामान्य परिवर्तन हेछि
ए परिवर्तन कहूची जे एक्चुअली कम्युनिकेशन राष्ट्र राष्ट्र भितर जो कम्युनिकेशन मेथड अच्छी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बा एम्बासी कम्युनिकेशन बा थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज आल्सो कम्युनिकेशन जो राष्ट्र राष्ट्र भितर संपर्क नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन आदौ नहीं सेठी संपर्क टाको इस्टाब्लिश करे यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलित जातिसंघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उभय राष्ट्र भितर संपर्क को मध्यस्थता भितर मेडिएटिंग करे दैट इज आल्सो रिलेशन दैट इज a shadow relation. That relation is called shadow relation. There is no direct link. There is no direct relation. There is a relation through a third party. The third party is UNO, United Nations Organization. That is called mediation, international mediation. Theory of conflict resolution. ये यूनिट रो इम्पोर्टेंट अच्छी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अर्थात रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स अमंग नेशंस द नेशंस हु आर एंगेज्ड विथ डिस्प्यूट should come into solution. The solution is the process of solution is initiated by the third party that is primarily called UN. मिलित जातिसंघर व्यवस्था भितरे मिलित जातिसंघर एकमात्र मिशन तुम जानिच जे विश्व रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा करे in order to establish permanent and perpetual peace, international peace and stability. It is the only exclusive and primary mission of UNO. Where there is any dispute among nations, UNO interferes in that dispute and asks every nation who are party to dispute should come to dialogue table. आलोचना माध्यम रे समस्त विवाद अंतर्जातिक विवाद समाधान करबा होची मिलित जातिसंघर एकमात्र कार्य जहा द्वारा विश्व शांति आ स्थिरता सबु बेले प्रतिष्ठा ही रही तेणु मिलित जातिसंघ उद्यम रे कॉन्फ्लिक्ट बा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाए राष्ट्र राष्ट्र भितर थिबा इट मे बी थ्रू बायलैटरल अर्थात द्विपाक्षिक आलोचना डायलॉग माध्यम रे भी हे पारे जोठी बायलैटरल डायलॉग फेल कला सेठी यूएनओ इंटरफेयर करे एवं यूएनओ उभय पक्ष को आलोचना माध्यम को आने सेठी समाधान करे दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ये गोटे छोटिया छोटिया कॉन्सेप्ट जार गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छे आंतर्जातिक व्यवस्था आंतर्जातिक संपर्क को बुझिया पई एगुडिक बहुत समय परीक्षा आसी था तेणु ये जो कॉन्सेप्ट गुडिक बुझीथिले आमे ताकू परीक्षा प्रेजेंट करिया पई बा क्वेश्चन आंसर लिखिया पई सहज साध्य हो एथरे एक्सरसाइज अछि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग assumptions of liberalism and there is a difference between realist and liberal frameworks. So, new liberals, traditional scholars. What do you mean by order? International order. जोटा मैं कहूँ international order, international politics, globalism, structuralism, functionalism, security, communities, security, state security, state sovereignty. Sovereignty तुम्हें जानी चाहिए. Sovereignty means supreme power. It is one of the attributes of a state. State has 4 attributes, 4 elements. One is population, another is territory, third one is government,
and fourth one is sovereignty. Sovereignty means supreme power. It has two angles. One is internal, another is external. That state is called sovereign state, which is internally supreme and externally independent. ए चारिटा एलिमेंट भितर गोटे एलिमेंट नथिले राष्ट्र को राष्ट्र भाव में विवेचित करा जाय परिबा। तेणु राष्ट्र चारिटा the state has four elements. One is population, there must be certain population. Another is territory, a state must have its own land. Third one is government, state must have its own managing organization, that is called government. And fourth one, which is not seen, which is realized, that is called supreme power. Power, supreme power. It has two facets. One is internal, another is external. Internally supreme, externally independent. से sovereignty रो गोटिए कथा मु कहि दे बुझिबो example. Before 1947, India was not a state. India was not termed as a state. India has population, territory, government, but it had not supreme power. It was not free from external control. So that sovereignty is fourth and major attribute of a state. To fulfill, to maintain sovereignty, the states always use their every asset, every power to maintain its own security. Tinta sare laude. Tinta sare. Awo china. Back na kori ऊपर close कर दे. अब आपने mute करी सोचा देखियो. मोटा. एक मोटा close. close करिए. हाँ ऊपर डाउन. ये यूनिट करिए. ठीक है. Another approach, unit 3, that is Marxist and other radical approach. You know Karl Marx? Karl Marx has also his own design of international relations. You know, Karl Marx is a revolutionary political philosopher. He has changed the meaning of political science. He has changed the nature of political science, and he has changed the evolution of political science, the process of evolution of political science. That Karl Marx has his design. To understand international politics is known as Marxist and other radical Marxist approach. Karl Marx, you know, is a leftist thinker, communist thinker, who always emphasize on economic equality among individuals in the society. There must not be any difference among individuals in terms of that ideology envisaged by Karl Marx is known as Marxism. In international field also, Karl Marx emphasizes there must not be superiority or inferiority among nations in terms of economic capabilities. अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू कौनसी राष्ट्र अन्य राष्ट्र ठारू उच्च किंबा नीच न रहिबार जो संपर्क सृष्टि हवा कथा ताकू ही आंतर्जातिक संपर्क बोली कुहा जो बोली कार्ल मार्क्स कहता. कार्ल मार्क्स मतरे अर्थनैतिक व्यवस्था माध्यम रे
अर्थनैतिक समानता माध्यम रे जो आंतर्जातिक व्यवस्था गढ़ा जाई था आंतर्जातिक संपर्क इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ से कही इंडिविजुअल सोसाइटी रे ताहा भी कहले से इंटरनेशनल सोसाइटी रे देयर मस्ट नॉट बी एनी डिफरेंस among nations in terms of economic strength. Elements of Marxist approach, you know, historical materialism, dialectical materialism, classless society. There are 8 elements, but it was in individual society, it is also in international society. There are 8 elements as envisaged by Karl Marx, you know, the German philosopher. Economic relation makes strengthens international relation among nations, and that is known as Marxist approach to the study of international relations. Imperialism, theory of imperialism. You know, imperialism means the extension of its own administration, its own empire, अर्थात साम्राज्यवाद बोली जहाँ को कहा जाए इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद आउ तार अनदर इंटरलिंक्ड टर्म होची कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। ये साम्राज्यवाद को संपूर्ण भाव रे इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को संपूर्ण भाव रे विरोध करंती कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नेवर supports, never approves any subjugation of a sovereign nation over another sovereign nation. Unit 3, Marxist approach to the study of international relations. Marxist approach, Unit 3. Imperialism and colonialism are the negative factors of international relations, as Karl Marx says. Theory of colonialism. Colonialism समझते जानी जो colonialization means the loss of sovereignty of a nation due to over capture of another nation to a nation means गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र द्वारा शासित होबार व्यवस्था को colonialism और imperialism बोली कहा जाए। फॉर एग्जांपल मु बुझौची जे अतीत रे इंग्लैंड निजर साम्राज्यवाद को विस्तार करथिला बहु स्वाधीन राष्ट्र को एशिया और आफ्रिका महादेशर बहु स्वाधीन राष्ट्र को निज शासन अधीन को दे निज साम्राज्य को विस्तार करथिला। इंग्लैंड थिला एक इंपीरियलिस्ट स्टेट, साम्राज्यवादी राष्ट्र। और जो राष्ट्र माने पराधीन हेले से माने हेले गोटी गोटी कॉलोनी, उपनिवेश कहार ब्रिटिश इंपीरियलिज्म रो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद रो जो माने पराधीन राष्ट्र हेले से माने हेले गोटी गोटी कॉलोनी जहाँ को जाए कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, these terms are two sides of a same coin. जोठी इंपीरियलिज्म अच्छी सेठी कॉलोनियलिज्म अच्छी। ये व्यवस्था को कार्ल मार्क्स संपूर्ण भाव में विरोध करती।
A colonialism also traditional and modern. British साम्राज्यवाद लोप पाई एशिया आ आफ्रिकार जो राष्ट्र माने ब्रिटिश शासन अधीन होते अतीत से स्वाधीन हो सारी सत पॉलिटिकल colonialism रो समाप्त घटी बट देयर इज नियो colonialism एबे नूतन भाव रे साम्राज्यवाद मुंड टेकी कि साम्राज्यवाद अर्थनैतिक साम्राज्यवाद राष्ट्र जदियो states are now independent but economically they are under the influence and control of mighty economic states like USA, America, German, England, Japan, France. These are neo-imperial states and other poor nations. The states now in the international society are divided into two camps. You know, one is developed nations. Other group of nations are known as developing nations. The developed nations are mighty in terms of economic capability. They have three types of strength. One is financial strength, another is military strength, and the third one is technological superiority strength. But developing nations are lacking these strengths. अर्थ नहीं, सामरिक शक्ति नहीं, किंबा अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं से मानकर विकास पाई। तेणु यही तीनोटी होची गोटे राष्ट्रर स्थायित्व पाई जरूरी आवश्यकता। प्रत्येक राष्ट्रर स्वाधीनता को सुरक्षित करी रखिबा पाई जेउ तीनोटी एलिमेंट आवश्यकता अछि से तीनोटी एलिमेंट होची फाइनेंशियल नेसेसिटी, अनदर इज टेक्नोलॉजिकल नेसेसिटी, थर्ड वन इज मिलिटरी नेसेसिटी। ये तीनटा जाक पाई आजिर स्वाधीन राष्ट्र माने धनिक श्रेणीर बा डेवलप्ड नेशंस रो नियंत्रण रे अछंती जा को जाउची नियो colonialism and neo imperialism। नव्य उपनिवेशवाद से समयर सीधा सड़क नियंत्रण व्यवस्था उठी जाइछि। द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती विश्व रे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड सिस्टम रे ऑर्डर रे कोनोसी राष्ट्र आजिर दिन रे पराधीन नांती राजनैतिक दृष्टिकोण किंतु आर्थिक दृष्टिकोण विकास दृष्टिकोण एवं जातीय सुरक्षा दृष्टिकोण राष्ट्र माने गरीब राष्ट्र माने डेवलपिंग गरीब अर्थात डेवलपिंग नेशंस माने धनिक श्रेणीर राष्ट्र नियंत्रण रे अछंती। शासन एक प्रकार शासन अधीन अछंती जहा को जाउची नव्य उपनिवेशवाद बा नव्य साम्राज्यवाद। ये व्यवस्था को कार्ल मार्क्स सदा सर्वदा विरोध करती। आ गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी मार्क्सिस्ट अप्रोच रे थियोरी ऑफ हेजमनी। हेजमनी अर्थात लीडरशिप, इंटरनेशनल हेजमनी। नेतृत्व किए नहीं जार सामर्थ्य था। The state which has capability in terms of military strength, superior military strength, capability in terms of economic strength, capability in terms of ultra modern technological strength। जो राष्ट्र एभली कैपेबिलिटी अच्छी से ही आंतर्जातिक नेतृत्व नहीं पारिबो। नेउचंती मध्य जहा को जाए इंटरनेशनल लीडरशिप बा इंटरनेशनल हेजमोनी। आंतर्जातिक नेतृत्व से राष्ट्र माने अमेरिका को, रूसिया को,
बा चाइना को बा इंग्लैंड को बा फ्रांस को जो माने मिलित यूनाइटेड नेशंस रो सेकेंड हाई कैपेसिटी फोरम बा ऑर्गेनाइजेशन होची सिक्योरिटी काउंसिल ले परमानेंट मेंबर अछंती तांको सहित ईस्ट रो बा साउथ एशिया रो जापान दक्षिण अमेरिका ब्राजिल भली राष्ट्र समूह आज दिन में शक्तिशाली होती से माने आंतर्जातिक स्तर में नेतृत्व नवा पई सक्षम होती को दृष्टि ये तीनोटी सामर्थ्य दृष्टि या कह पॉलिटिकल हेजमनी वेरी इंपोर्टेंट टर्म अच्छी टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट भी अच्छी जहाँ को तुम्हें बुझा दरकार पॉलिटिकल हेजमनी हेलो 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 समरी हेलो हेलो सर हाँ हेलो सर ये जनवरी से सर एग्जाम केवे हो सर एग्जाम सार को पचार डायरेक्टर सार डेप्यूटी डायरेक्टर सार जनवरी सेशन एग्जाम हबो तमरो डिसेंबर मास रे डिसेंबर रे डिसेंबर 2020 you are eligible so you can apply your form fill will happen in September then आपण माने आपनकर एग्जाम देबे जनवरी डिसेंबर डिसेंबर 1 रो स्टार्ट हां ये असाइनमेंट सितंबर रे देबो ना सर असाइनमेंट सितंबर हां आओ से लेखबाटा प्रोसीजर टा असाइनमेंट ओ जेना सर कहो हां okay you ask any question sir hello sir हेलो सर हेलो सर कंटिन्यू करिवा हां सर radical unit 4 radical and neo radical approaches to the study of international relations radical theory hello radical theory to the study of international relations refers to the very clear-cut development and under-development approaches to the study of international relations. Development basis रे जो अंतर्जातिक संपर्क अध्ययन व्यवस्था अच्छी ताको radical theory of international relations बोली कहा जाउछि it has its origin to the economic capability of a state. The states which has not maintained its achieved its minimum amenities to its individuals is called underdeveloped states. The states which have achieved maximum amenities to its own individuals are termed as developed states. जो राष्ट्र गुड़िक निजर जनसाधारण को सर्वाधिक जीवन धारणर मान बा साधन गुड़िक जोगाइबा सक्षम होइचंती से राष्ट्र गुड़िक डेवलप्ड बा विकसित राष्ट्र भाव में आंतर्जातिक स्तर में कहुची जो राष्ट्र गुड़िक निजर जनसाधारण को निजर नागरिक मानू सर्वनिम्न जीवन धारणर मान खाद्य कुह फूड क्लॉथ शेल्टर कुह बा अदर amenities like education facilities, health facilities, technological
कम्युनिकेशनल फैसिलिटी अदर फैसिलिटी से माने जोगै पारि नांती माने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर पारि नांती से गुडी को अंडर डेवलप्ड बा अणविकसित बा विकासशील राष्ट्र बोली कहा जाउछि। ए दुईटी प्रकार राष्ट्र गुडी को नै जो संपर्कर व्यवस्था निर्धारण करा जायछि ताको रेडिकल और न्यू रेडिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल स्टडी बोली कहा जाउछि। सेंटर एंड पेरिफेरी theory of dependencia सेंटर पेरिफेरी डिपेंडेंसिया माने इंडिविजुअल नेशंस माने इंडिपेंडेंट नेशंस माने जदियो से माने इंडिपेंडेंट स्टिल दे आर डिपेंडिंग अपॉन अदर डेवलप्ड नेशंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। थ्री फीचर्स आर I have already told you and now I am repeating that military assistance, financial assistance, technological assistance are needed by each developing nation from developed nations so that the nations which are requiring these three assistance, these three types of assistance are depending upon the developed nations. That is called theory of dependencia. विकसित राष्ट्र उपरे जो राष्ट्र माने निजर विकास पाई सर्वदा निर्भरशील से राष्ट्र गुड़िकर निर्भरशीलता को एठारे थियोरी ऑफ डिपेंडेंसिया बोली कहा जाउछि। से माने सर्वदा निर्भरशील विकास तो आवश्यक ही विकास न करी विकास बिना कौन सी राष्ट्र केबे हेले गतिशील हे पारिबो ना। विकास सर्वदा आवश्यक विकास पाई जो आवश्यकता अछि गोटे राष्ट्र निजर विकास पाई जो आवश्यकता अछि से आवश्यकता निज पाखरे नाही से आवश्यकता को पूर्ण करिया पाई डेवलप्ड नेशंस उपरे से सर्वदा निर्भरशील जाहाको कहा जाय थियोरी ऑफ डिपेंडेंसिया बोली। सर्वदा आंतर्जातिक संपर्क यही निर्भरशीलता उपरे आधारित बोली राडिकल एंड नियो राडिकल बोली कहउछथि। जो राष्ट्र खाद्य पाई एबे भी निर्भरशील एशियार नहले मध्य आफ्रिकार बहु राष्ट्र एबे भी खाद्य पाई विकसित राष्ट्र उपरे निर्भरशील। जो राष्ट्र पाखरे खाद्य नाही से स्वाधीन मत पोषण करि पारिबो नाही। अन्य राष्ट्र जहां ऊपर से निर्भर से राष्ट्रर चिंताधारा को से समर्थन करने को बाध्य। ये हूँ आंतर्जातिक संपर्क व्यवस्था आज दिन तेणु ये व्यवस्था को कहा जाउछि थियोरी ऑफ डिपेंडेंसिया बोली निर्भरशीलता। ये व्यवस्था पोस्ट वर्ल्ड रे क्रमे डेवलप करथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध परे सबु राष्ट्र निजर पुनर्निर्माण पाई लागि पड़िथिले इंक्लूडिंग जापान हु फेस्ड डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस इन सेकंड वर्ल्ड वार। समस्ते निजर पुनर्निर्माण पाई लागि थिले रिस्ट्रक्चरिंग से प्रोसेस रे किछि राष्ट्र जो मानक पाखरे सामर्थ्य थिला आर्थिक सामरिक एवं टेक्नोलॉजिकल सामर्थ्य से माने आगु चली गले जो मानक पाखरे ए सब साधन नथिला से माने बहु पछरे पड़ी गले जाकी अंतर्जातिक समाज को आर्थिक दृष्टिकोण दि भाग व्यक्त कर देला। गोटे राष्ट्र गोटे प्रकार राष्ट्र समूह होचंती हाथ गणती केतोटी विकसित राष्ट्र बाकी सब राष्ट्र होचंती विकासशील राष्ट्र। विकास पाई अन्य मानक ऊपर निर्भर करबा होची विकासशील राष्ट्रर चरित्र आज दिन में। यूनिट 4 चारिटा यूनिट आम आज
कंप्लीट कले क्वेश्चन आंसर टिके देखिबा जानिच हम परीक्षा रे दुई प्रकार क्वेश्चन आसे दुईटी सेक्शन थाए 100 मार्क रो दुईटी सेक्शन थाए गोटिए सेक्शन रे एक्सक्लूसिव लॉन्ग क्वेश्चंस आसी थाए 5टी क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट नवा को पड़े एति दुईटी सेक्शन थाए प्रथम सेक्शन रे 4 रु 5टी एक्सक्लूसिव एसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन आसे जहार लेंथीनेस होची 500 वर्ड्स रो आंसर 500 शब्द रे से आंसर को हमको लिखिबा को पड़े तेणु प्रत्येक क्वेश्चन को हमें सही जो सब्जेक्टिव सेक्शन 1 रे जो क्वेश्चन गुडी को था सेथुरा हमें अति बेसी रे 2 अति बेसी रे 3टी बा सर्वनिम्न 2टी अटेम्प्ट नवा को पड़िबो सर्वनिम्न 2टी सेथिरु सर्वाधिक 3टी आउ गोटिए सेक्शन अछि सेक्शन 2 सेथुरा हमें सर्वाधिक 3 बा सर्वनिम्न 2 अर्थात गोटे सेक्शन रु 3टी नेले अन्य सेक्शन रु 2टी हमकु क्वेश्चन रो आंसर दवा बोर्ड रे 5टी क्वेश्चन रो आंसर दवा पड़िबो प्रत्येक क्वेश्चन रो वैल्यू होची 20 मार्क्स रो जोटा सेक्शन 1 रे अछि 500 वर्ड्स रो दुईटा किबा तीनटा क्वेश्चन रो हमें आंसर दवा पड़िबो क्वेश्चन आंसर निज लैंग्वेज रे हेले सबुठारु भलो बहिरु देखि उतारिबाटा ठीक नुहे कहीं की मु कहूची जे बही रे जेते लंबा उत्तर अछि सब गुडी को आमे खाता रे समय एवं शब्दावली रो संख्या दृष्टि रु सब गुडी को आमे उतारी परिबा ना उठे की थोई परिबा ना तेणु आमे ताकू भल भाव रे बुझिबा प्रत्येक विषय प्रत्येक कॉन्सेप्ट को भल भाव रे थरोली बुझिबा एवं निज लैंग्वेज रे तार जिस्ट को प्रिसाइजली जेते कम संभव आमे उपस्थापन करिबा सेति पई आमे इंट्रोडक्शन प्रत्येक क्वेश्चन रो इंट्रोडक्शन को यथा संभव कम करिबा इंट्रोडक्शन ऊपर एते फोकस दवार आवश्यकता नाही इंट्रोडक्शन न रहले भी किछि असुविधा न थाए तबे सीधा सड़क अप्रोच आमे आरंभ करिबा प्रत्येक क्वेश्चन रो आंसर सीधा सड़क आमे आरंभ करिबा तेणु क्वेश्चन को आमे जेतबे आरंभ करिबा गोटी किबा 2 लाइन इंट्रोडक्शन रु देई तापरे आमे तार मीनिंग को लेखिबा तार डेफिनेशन को लेखिबा तार एक्सपोनेंट बा जो माने तार सृष्टिकर्ता अछंती से कांसेप्ट रो तांको नाम को लेखिबा तांको मत को लेखिबा तापरे से कांसेप्ट को आमे पारा बाय पारा बुझे चलिबा टिल द एंड कंक्लूजन 3-4 लाइन आमे केवल रखिबा बेसी रखिबानी प्रत्येक 500 वर्ड रो आंसर पई कंक्लूजन 3 रु 4 लाइन मात्र रहिबा सबुठारु भलो तेणु अति कम रे जो A4 साइज खाता रे आमे आंसर लेखुचंती पेपर रे लेखुचंती सेथिरे अति कम रे 3 पेज हेले हमरो भाबुची 5 वर्ड हे जाई पारे कारण जो पिला माने ताकू सेही बड़ी संयोजना करंती बा खूब कम स्पेस देई सर्वनिम्न स्पेस देई लेखंती 3 पेज रे सेटा कवर हे जाई परियो 500 वर्ड रो आंसर टी सेक्शन 2 रे सेही भली मूल्य रो अर्थात 20 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन रो मूल्य होची 20 नंबर आमे प्रत्येक क्वेश्चन पई दुईटा बीट अछि अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन रो शब्दावली होची 250 वर्ड जो प्रश्न आमे अटेम्प्ट नबा सेथिरे बीट थाए बीट 1 बीट 2 अर्थात सही क्वेश्चन रो दुईटा जाक बीट को आमे निश्चित भाव रे अटेम्प्ट करिया गोटे क्वेश्चन रो गोटे बीट को आ गोटे क्वेश्चन रो आ गोटे बीट को इमति आमे करि परिबा नाही तेणु सेक्शन 2 रो प्रत्येक क्वेश्चन रो दुईटी जाक बीट को आमे
कवर करिया पड़िबो तार शब्दावली होची 250 वर्ड रो अर्थात एका कथा गोटे बीट 250 वर्ड हेले दुईटे जाक बीट 250 into 2 5 वर्ड एई भली आमे पांचटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिया सेति पई क्वेश्चन किभली पैटर्न ने आछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को टिके फॉलो कले भलो हबो बेले बेले डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाए बहरे जो प्रत्येक यूनिट रो एंड रे क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन गुडी को डायरेक्ट भी आसी जाई थाए आउ सेटा रेयर केस रे हुए किंतु क्वेश्चन गुडी को एभली रिफ्लेक्टिव आसे आमे जदी ताकू थरोली बुझी नथिबा से आंसर को अटेम्प्ट नबा हम पई कष्टकर हुए बा एपट सपट आंसर हुए जहार वैल्यूएशन से बळे हिता तेणु पिला माने टिके कांसेप्ट को बुझ मो आजी कोनसी क्वेश्चन आंसर सीधा सळक तुमको मु कहू नाही नेक्स्ट क्लास को मु क्वेश्चन गुडी कर आंसर कोन हबो सम्यक भावरे किछि क्वेश्चन रो सूचना मु प्रथम आगे देई देबी जो चारिटा यूनिट आमे पढिले तापरे नेक्स्ट चारटा की पांचटा बेसिकली 6टा खंड यूनिट नेक्स्ट क्लास को आमे सारिबा प्रस्तुति आस इट इज द बिगिनिंग क्लास ई सब गुडी को सेटिंग ठीक नथला तेणु आमे आजी जेते नबा कथा यूनिट आमे नै पारि नांती चारिटा यूनिट नै चंती आजी 6टा यूनिट नबार थिला 5 प्लस हे पारनी नेक्स्ट क्लास रे आमे मिनिमम 6टा यूनिट नबा एवं तार भितरे मु किछि क्वेश्चन रो पॉसिबल क्वेश्चन रो आंसर तुम मन को सूचना देबी एवं तुमे किछटा पढिथिबो जो गैप पीरियड मिलिबो ए चारिटा यूनिट किछि पढिथिबो जदि किछि डाउट था पचारि परिबो मु तारा एक्सप्लेन भी करि परिबे आज आमे सर प्रभात सर हेलो यस सर सर रखिया सर नहीं पिला किसी क्वेश्चन ही पचारे कोसी टिके बुझिबे हां सर डाउट हां सर if you have any doubt you can ask your questions through chat or directly you can ask students you can ask questions now you can unmute your mic by yourself and ask the question. Hello. Yes, please. Hello. Sir, Kalpana is here. Sir, more doubts like Neo-Realist approach के बुझा पड़ला नहीं so. Neo-Realist. Again. Realist or Neo-Realist. It is economically on the basis of economic strength of a nation. The entire world is divided into two camps, two nature of states. One is developing nature of states, another is developed nature of states. The relation among these two nature of states is known as realist and neo-realist. Hello. हाँ सर. Hello. Yes. Sir, another one is neo-radical approach. Another one is neo-radical approach. Neo-radical. Again. There is some sort of change with the radical approach that is added the military differentiation among nations, including economic strength of nations. The radicals emphasizes on the economic relation among nations on the basis of developed and underdeveloped, and neo-radicals emphasize economic with military difference strength
of nations is known as Neo-Radical Approach to the study of international relations. Thank you, sir. Any other? Okay, sir. Sir. I think there is no more questions. Okay, Sir. now we'll have to wind up. So thank you, sir, for your nice presentation. Thank you all the learners. Oh, let us meet tomorrow. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. How can I photo? Yeah. Liberalism silent. Yeah, actually, I